अच्छा, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन यहाँ से आपके पास स्टार्ट है। द एसी मेन्स इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इन अ हाउस कंसिस्ट ऑफ थ्री वायर्स, द लाइफ, द न्यूट्रल एंड द अर्थ। स्टेट द पर्पस ऑफ द लाइफ वायर। अब लाइफ वायर का पर्पस आपने बताना है। आपके पास टोटल तीन तरह की वायर्स होती है नॉर्मल, जो हाउस वायरिंग में यूज करते हैं। और उसमें जो है वो लाइव वायर, आपके पास वो वायर होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, स्टार्ट होता है मतलब मूव करना, जिसमें करंट फ्लो करता है। तो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है लाइव वायर का। वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जिससे पास हो रहा होगा सिंपल, वो हमारे पास लाइव वायर होगी। और न्यूट्रल वायर हमारे पास क्यों रिक्वायर्ड होती है? एक्सप्लेन व्हाई द न्यूट्रल वायर इज नीडेड। अच्छा, If the live wire gets damaged. नहीं, अच्छा, अब इसमें देखो होता है ये बेसिकली कि जो थ्री पिन प्लग का, अगर आपने सेटअप पढ़ा हो, आपको थ्री पिन प्लग का सेटअप याद हो, तो उसमें ये होता है कि एक एंड से जब करंट फ्लो करता है तो हमें दूसरे एंड पर भी जो है वो कनेक्शन चाहिए होता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो हाई पोटेंशियल तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हमारा लो पोटेंशियल है। तो करंट आपके पास जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव टर्मिनल इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आपके पास सर्किट एक कंप्लीट होगा तो चार्जेस का पाथ कंप्लीट होगा। तो न्यूट्रल वायर इसलिए रिक्वायर्ड होती है आपको, ताकि आपका जो पाथ है, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, करंट तो पॉजिटिव से फ्लो करेगा, लेकिन फ्लो कहाँ तक करना है, किस कंपोनेंट के थ्रू फ्लो करना है, तो वो सब जो है वो कनेक्शन आपका नेगेटिव जब टर्मिनल लग जाता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव उसे पता होता है कि चार्जेस में आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है। तो बेसिकली न्यूट्रल वायर का काम ये होता है कि चार्जेस का पाथ कंप्लीट करना या सर्किट कंप्लीट करना। और इसमें एक थर्ड वायर होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर हमारे पास सेफ्टी के लिए होती है। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, आपने देखा होगा कुछ मतलब पीसी और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि मेटल बॉडी अगर होती है, उन्हें टच किया जाए तो वो वहाँ पे शॉक आपको मिलता है, वो इलेक्ट्रिक। तो उससे बचने के लिए फिर उसमें अर्थ वायर लगाई जाती है, ताकि वो आपके पास एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो बॉडी के थ्रू पास ना हो। Part B है each circuit in house includes the fuse for protection. An electrical appliance is switched on and the current in the fuse becomes greater than the rating of the fuse. अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑन किया और जो आपके पास करंट था फ्यूज में, उसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई रेटिंग ऑफ द फ्यूज से। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस। पहले The fuse will blow, क्योंकि आपने so हम्म, the circuit will become incomplete, which will protect the appliance. ठीक है, ठीक है, कोई करंट पास नहीं हो पाएगा। नो करंट पास थ्रू द सर्किट, और उसके बाद रीजन आपके सामने ही है कि जो वैल्यू है आपके पास वो ग्रेटर हो गई आपकी रेटिंग ऑफ फ्यूज से।
और नेक्स्ट पार्ट, स्टेट live wire, इन विच ऑफ थ्री वायर्स द फ्यूज इज लोकेटेड। लाइव वायर, और लाइव वायर में कनेक्ट करना क्यों जरूरी है? because the uh, current will pass through the live wire and go into the appliance. जी, so it is located in live wire cross current pass through it, and if the value of current is exceed ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कोई इतना टिपिकल नहीं था। आगे देखते हैं इसमें। Spotlight in a television studio is at full brightness. The lamp inside the spotlight is powered by a 230-volt supply, and the current in the filament of the lamp is 27 ampere. Calculate the power of the lamp. पावर कैलकुलेट करनी है आपने, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अब देखो यहाँ पे वोल्टेज गिवन है 230, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है 27 एम्पियर। आप सिंपल पावर का फॉर्मूला यूज करोगे, P इज इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज 230 और इलेक्ट्रिक करंट 27। तो इन दोनों का आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास पावर का आंसर मिल जाएगा। 6210. और नेक्स्ट है, द स्पॉटलाइट इज केप्ट स्विच्ड ऑन एट फुल ब्राइटनेस, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द लैंप इन 30 मिनट्स। अब एनर्जी ट्रांसफर कैलकुलेट करना है आपको, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा देखो, एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपके पास, एनर्जी का फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज करते हैं बेसिकली, E इज इक्वल्स टू वी आई टी। ठीक है, अब इसमें से वी आई जो है वो आपके पास पावर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर जो है वो सिंपल पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। तो पावर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है टाइम से, टाइम मिनट्स में उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60। से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपके पास, इसको एक्सपोनेंट में लिखें अगर हम, 1.1 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 जूल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ यूजिंग 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 23 सेंट्स। ये आपके पास जो है वो रेट आ गया सिंपल, कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर रहे हो अगर आप, तो
उसका जो रेट है वो 23 सेंट्स है। आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ यूजिंग द स्पॉटलाइट फॉर 30 मिनट्स। अब आपने जो 30 मिनट्स के लिए लाइट को यूज किया है, उसके लिए आपने कैलकुलेट करना है कि कितनी कॉस्ट होगी आपकी। अब पहले तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लो आप। अभी तो हमने वॉट में कैलकुलेट किया है, उसको किलोवाट आवर में आपको लेकर आना होगा। उसके बाद फिर आप उसकी जो है वो प्राइस के साथ कैलकुलेशन करोगे। अच्छा देखो, अब आपने पहले इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। आपके पास जितने वॉट्स थे आप वो लिखो, उसको मल्टीप्लाई कर लो जो भी आपका टाइम है, लेकिन वो टाइम आवर्स में होना चाहिए। और इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे ताकि किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो। तो इसमें आपने सिंपल जो वॉट की वैल्यू है वो 6210 थी, वो लिखोगे आप। और टाइम जो है वो हाफ मिनट का है। इसका मतलब ये है कि उसे कन्वर्ट करना है आवर्स में। आवर्स का मतलब ये है कि वो आधे घंटे के बराबर होगा, तो वो 0.5 शो करेगा। और लास्ट में आप उसे डिवाइड कर लोगे 1000। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6210 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, 3.1। 3.105। ठीक है, तो 3.1 किलोवाट आवर आपके पास जो है वो यूज हो रहा है। और 1 किलोवाट आवर की जो प्राइस थी वो 23 सेंट्स थी। अब आप सिंपल इसको प्राइस में कैलकुलेट करना है, तो प्राइस में आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। तो 3.1 मल्टीप्लाई बाय 23, 71.4 सेंट्स आपके पास जो है उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक भी इजी था। अच्छा, अब ये वाला देखो, हम ये कर चुके हैं, स्टेट द पर्पस ऑफ द न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे कि आपके पास सेम रिपीट हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें अब ये तो हमें पता है। टू कंप्लीट द पार्ट
फॉर द चार्जेस और टू कंप्लीट द सर्किट, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, दोनों चीजें सही है। उसके बाद ये द लाइव वायर in the electric heater touches the outer metal case, explain how the earth and the fuse together protect the user from electric shock. अच्छा, अब नॉर्मली फ्यूज का भी आपने सिंपल यहाँ पे यूज लिखना है, और अर्थ वायर का, दोनों हमें पता है सेफ्टी कंपोनेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और दोनों ही ऊपर भी वाले क्वेश्चन में हमने सेम कॉन्सेप्ट देखा था। तो पहले वाले के लिए आप लिख सकते हो ग्राउंड द चार्जेस, और फ्यूज आपको प्रोटेक्ट करेगा उसकी वायर मेल्ट हो जाएगी या वो ब्लो हो जाएगा अगर करंट की वैल्यू एक्सीड करती है। द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, शॉर्ट लिख दिए यहाँ पर। कॉन्सेप्ट आपको पता ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था सेम, आपने वही रिपीट करना है जिसे। अब इसमें क्या था, हेयर ड्रायर डज नॉट हैव एन अर्थ वायर, अब उसमें अर्थ वायर नहीं है। ठीक है, तो एक सेफ्टी पर्पस, जो एक सेफ्टी आपके पास था ऑप्शन, वो तो यहाँ पे माइनस हो गया। अर्थ वायर अब इसमें नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई दिस हेयर ड्रायर इज स्टिल सेफ टू यूज। It will have a fuse. लाइव वायर इन द इलेक्ट्रिक हीटर टचेस द, फ्यूज का भी लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें जो बेसिक वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो आपके पास लाइव वायर में लगेगा। ठीक है, और लाइव वायर में अब उन्होंने फ्यूज का ऑप्शन आपको नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उन्होंने कहा है कि अर्थ वायर जो है वो नहीं है उसके कनेक्शन में। अगर फ्यूज का ऑप्शन होता, क्योंकि ऊपर जो है वो उन्होंने जर्नल पूछा है। ठीक है, उन्होंने ऊपर ये नहीं कहा कि हेयर ड्रायर में आपके पास फ्यूज लगा हुआ है। सी पार्ट में वो जर्नल पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर अर्थ वायर नहीं है उसमें हेयर ड्रायर में, तब भी वो सेफ कैसे हो सकता है। फ्यूज का तो एक ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन जो आप मार्किंग स्कीम वगैरह देखोगे ना, तो उसमें फ्यूज का रेफरेंस ऊपर दिया तो है इन्होंने, लेकिन फ्यूज का रेफरेंस इसलिए नहीं है कि वो हमारे हेयर ड्रायर में कनेक्टेड है। उसके अलावा भी आपके पास एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसको आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है। अच्छा, इसमें देखो एक आपने चीज पढ़ी होगी, डबल इंसुलेशन, क्योंकि जब आप वायरिंग कर रहे होते हो तो उसमें लाइव वायर, अर्थ वायर, सबकी वायरिंग तो अपनी जगह होती है, कोटिंग होती है उस पे, फिर तीनों को कंबाइन करके एक और उस पे इंसुलेशन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डबल इंसुलेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास डबल इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप। और दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये लिख सकते हो यहाँ पर कि हेयर ड्रायर की बॉडी जो है वो प्लास्टिक बॉडी हो। ठीक है, तो वो एक इंसुलेटर का काम करेगी, तो आपके पास वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पूछा है कि इन सम मॉडर्न होम सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूजेस, सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सर्किट ब्रेकर रेदर देन अ फ्यूज। कोई एक एडवांटेज सर्किट ब्रेकर यूज करने का एज कंपेयर टू द फ्यूज।
reduced risk of short circuit? ठीक है, शॉर्ट सर्किट में हम दोनों को यूज करते हैं उससे बचने के लिए। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज इस सेंस में बताने कि सर्किट ब्रेकर जो है वो आपके पास बेटर किस तरह से फ्यूज है, मतलब क्योंकि हम सर्किट ब्रेकर्स यूज कर रहे हैं आजकल, हाउस वायरिंग का जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, फ्यूज यूज नहीं कर रहे। रीजन क्या है उसका? जर्नल एडवांटेज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई साइंटिफिक रीजन हो। Circuit breakers resettable सर्किट ब्रेकर can be reset. हाँ, क्योंकि इसका सिंपल सा पर्पस ही ये है कि सर्किट ब्रेकर आपके पास जो है वो बार बार आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ता, फ्यूज आपको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर जो है वो आपके पास दोबारा आप उसको रीसेट करके अपनी पोजीशन पर ला सकते हो। फ्यूज को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें रिप्लेस जो करना पड़ रहा है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और जो आपके पास सर्किट ब्रेकर में रीसेट का ऑप्शन है, ये इसका एक एडवांटेज है। तो इसकी वजह से आपके पास सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू द फ्यूज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अब काफी पुराने हो गए हैं। अच्छा, अभी जो हेयर ड्रायर वाला लास्ट हम कर रहे थे, वो यहाँ पर भी है, बस क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में दिए हैं, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन वही है आपकी सेम। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस काफी पुराने इंक्लूड हो गए, नए वाले अब चेक करते हैं। अच्छा, फिगर 1.1 shows a circuit diagram containing a 2000 ohm resistor of constant resistance and a thermistor। एक थर्मिस्टर है, एक फिक्स रेजिस्टर है। At one temperature, the resistance of the thermistor is 1200 ohms। अच्छा, एक सिंगल टेम्परेचर की बात हो रही है, वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, उस पे थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ohms है। और आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2000 ओम रेजिस्टर एट दिस टेम्परेचर। तो अभी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली थर्मिस्टर जो है वो 1200 ओम्स पर है सेट। और पोटेंशियल डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है इस रेजिस्टर के थ्रू इसी रूम टेम्परेचर पे, मतलब जब थर्मिस्टर की वैल्यू 1200 ओम्स है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, वोल्टेज आपने कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई रेफरेंस? अच्छा, पहले तो आप ये देखो दोनों का कनेक्शन किस तरह से, दोनों कनेक्शन आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों कंपोनेंट्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट?
सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट आपके पास सेम होता है, वोल्टेज वेरिएबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू नहीं है। और अगर आप ओम्स लॉ यूज करते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, वोल्टेज की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिक करंट मिसिंग है। अब वोल्टेज क्योंकि ना डिवाइड होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज दोनों पे डिफरेंट होगा, तो आप ये वाला वोल्टेज जो है वो दोनों पे अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों की वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, आप V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करोगे, उसमें टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट की वैल्यू अननोन और टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अब कॉम्बिनेशन भी आपको पता है और वैल्यूज भी आपके सामने है। Sir, would it be 3200? 3200, क्योंकि दोनों आपके पास सीरीज में कंबाइन है तो दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे। 3200, 12 डिवाइड बाय 3200 इज इक्वल्स टू 0.003। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास आंसर है 0.00375। हम इस डेसिमल को 1 2 3 प्लेस आगे शिफ्ट करके I इज इक्वल्स टू 3.7 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कर लिया टोटल। अब आपको ये चीज पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, चाहे वो थर्मिस्टर हो, रेजिस्टर हो या कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड हो। तो अब जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है क्रॉस 2000, अब इसमें आप वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है, तो वहां पर आप ये 12 वाला वोल्ट यूज नहीं करोगे, आप दोबारा से फॉर्मूला यूज करोगे V इक्वल्स टू आई आर। इसमें वोल्टेज को अननोन रखना है, करंट की वैल्यू आपने 3.7 मिली एम्पियर वाली यूज करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2000, तो वोल्टेज इक्वल होगा 7.5। यानी 7.5 वोल्ट 12 में से ये यूज कर रहा है, बाकी रिमेनिंग जो है वो थर्मिस्टर यूज करेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट, व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2000 ओम रेजिस्टर इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जो आपके पास 2000 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इंक्रीज होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ऊपर देखो आपके पास कॉम्बिनेशन ये है, इसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो थर्मिस्टर की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पहला क्वेश्चन।
अच्छा देखो If हमने the temperature is high, then the resistance will be high. अच्छा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट लिंक होता है फॉर द फिलामेंट, ठीक है, बट वी आर यूजिंग थर्मिस्टर ओवर हियर. So thermistor work in the reverse order, in the opposite order with the filament. तो टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास. एक होता है नॉर्मल कंडक्टर, वो तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, सिंपल, ठीक है, वो तो बिल्कुल सेपरेट केस है. जो वेरिएबल हमारे पास रेजिस्टर होते हैं उसमें आपके पास एक फिलामेंट है और नेक्स्ट हमारे पास एक थर्मिस्टर है. ओके, सो फिलामेंट में बेसिकली करंट, सॉरी, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली होते हैं. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, ठीक है. थर्मिस्टर में प्रोसेस अलग है. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है. Right, sir. Okay, so your question is to explain why the potential difference across the 2000 ohm resistor increase when the temperature increases. तो सिंपल कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर ये यूज करेंगे कि द टेम्परेचर when the temperature increases, the resistance to thermistor So, sir, if the resistance decreases and the voltage increases, actually this is the case of potential divider, right? If you remember the concept of potential divider, if we want to find out the output voltage over here or in the upper part, so this is the potential divider because two of resistors are connected in series combination, right? And series combination means that voltage will be variable for both resistors, right? right, sir. So that is the case of potential divider. And potential divider, we know that if resistance increase, so voltage will also increase. But if resistance decrease, voltage will also decrease, right? So when the temperature increases, the resistance through the thermistor decrease. So resistance decrease means voltage will also decrease for the thermistor. Because voltage and resistors are directly proportional to each other in potential divider. Voltage will also decrease for the thermistor. So the potential difference across 2000 ohm resistor increases when temperature increase.
Okay, these relay switch and transistors are no more included, so you may skip this part. Okay, next question is related to DC electric motor. The motor is connected to a battery with the positive terminal of the battery connected to terminal A. Explain why the coil turns in the direction shown. This side is connected with the positive terminal and point B is connected with the negative terminal. So explain why the coil turns in the direction shown. Sir, do we explain non-conventional current? Non-conventional current. No. Actually, this is the case of electric motor, the DC electric motor. So if you remember the concept, magnetic field will move from north to south pole, right? And current is passing from point A in upward direction, and current is moving in downward direction from side B. Okay. So it means that by using left hand rule, we can easily identify the direction of rotation or the direction of motion of the coil in magnetic field. So we can write it as, first you need to explain the concept, and the concept is when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, so due to change in magnetic flux through the conductor, conductor force is applied on a conductor, and if we need to find the direction of the force, we can find the direction of force on a conductor by using left hand rule. Okay. So, sir, we can't write that the rotation of the coil cuts through the magnetic field? Yes. You may also write Okay, in sir. the sense that magnetic field lines will change for the conductor if you are not writing the concept of magnetic flux.
Okay, next part, the turning effect is increased when the coil is wound around a soft iron cylinder. Explain why this happens. It's a temporary magnet, so EMF is induced. Okay, so soft iron cylinder is basically a temporary magnet, or it works like a temporary magnet. So EMF will induce through it. And the next one suggests one other way to increase the turning effect of the motor, The strength of magnet. the strength of magnet. So there are multiple options to increase the turning effect of motor. So you need to write any one. So increase the number of turns in the coil or increase the strength of the magnet. To increase the strength of a magnet. Okay, next one is again related to the potential divider. Figure 5.1 shows the potential divider circuit containing two resistors R1 and R2. There is an input voltage of 6 volt. Complete table 5.1 to show the output voltage for different values of the resistance of two resistors. Okay, so we are having two values, 8 ohms for resistor R1 and 8 ohms for resistor R2. So we need to calculate the output voltage. The input voltage is equals to 6 volt, right? So we need to calculate the output voltage when the resistance of R1 is equals to 8 ohm and R2 of the resistance is equals to R2. And the total voltage is 6 volt. Okay, so when the resistance of both resistors are equal, so it means this voltage will divide equally between these resistors, so that will be equal to 3 volt, right? And now if the resistance of R1 is equals to 800 and the resistance of R2 is equals to 1200, so what will be the output voltage? Output voltage means you need to calculate the voltage through R2 Sir, how did we get 3 volts? because the resistance of both resistors are equal. So it means voltage will divide equally, right? Because in series combination, voltage is variable throughout the circuit. So you need to calculate with the reference of uh, the formula of Ohm's law for individual component. But we know that the resistance of both resistors are equal, so it means voltage will also equal, right? So that's why we divide voltage equally between two resistors. But now in second case, the resistance of both resistors are different from each other, and you need to calculate the output voltage. So any idea how to calculate the output voltage? Okay, if you remember the formula for the potential divider, we can calculate the output voltage by using the formula of potential divider, that will be equal to R2 over R1 plus R2 multiplied by input voltage. So this is the formula for the potential divider. R2 is given in the question as 1200
and the combined value in the denominator will be equal to 2000, and the input voltage is 6 volt. So you can easily calculate the output voltage by using this formula. Twelve hundred multiplied by 6 divided by 2000, that will be equal to 3.6. So 3.6 is the voltage for this RT, right? Okay, from the part B of this question, okay, question shows the structure of the motor when the mass reaches the top of its motion. The switch is open, this disconnects the battery and causes the mass to fall. As the coil turns, a small voltage is produced. Explain why a voltage is produced as the coil turns. Because the rotation of the coil causes EMF to be induced. Yes. Okay, so when coil rotates, so due to change in magnetic flux, EMF will induce in the coil. Okay, question 7 shows the circuit diagram of a temperature gauge. It contains an ammeter, a thermistor, a fixed resistor, and a battery. Okay, so again we are having series combination of two resistors, and ammeter is also connected in it.
and there is a graph which shows you the current and temperature. State how the resistance of the thermistor change with temperature and explain how figure 7.2 shows this change. So first you need to explain the concept of the thermistor and also with the reference of the graph. So what is the working of thermistor? Okay, so in previous question we already written that thermistor works in the opposite way of the filament, in which the temperature increases, so resistance will also increase. But in this concept, and you may also check from the graph that when temperature is increasing on right hand side, electric current is also increasing. So electric current is increasing because resistance will decrease at this specific point when temperature is increasing. So it means that you may simply write resistance will decrease with increase in temperature, and with the reference of graph, the electric current increases with increase in temperature. It means that resistance will decrease. Okay, any confusion? No. So always remember thermistor works in the opposite order with the reference of filament. Filament works directly with the temperature. Temperature will increase with increase in resistance, and in thermistor, temperature resistance will decrease with increase in temperature. Okay, question number 9. Because the coil cuts through the magnetic field.
Explain why an EMF is induced in the coil when a magnet moves. We already did that question, that due to change in magnetic field. Due to change in magnetic field to the coil, EMF will induce. So again, a very simple concept. And the next part, state one way to increase the EMF induced. Increase the speed of rotation. Increase the speed of rotation, or increase the speed of the movement of the magnet, or increase the number of turns, or increase the strength of the magnet. Again, multiple options are there. The current in the coil is used to produce light from an LED, light emitting diode. In a space below, draw the circuit symbol for an LED. So basically you need to draw, it is like a diode. The circuit diagram for diode is like this. You just need to include two arrows for the light. This is for the circuit symbol for the LED. Okay, an LED is a more efficient source of light than a filament lamp. Explain what this statement means. Okay, basically we know that when we are using the orange bulb or the red bulbs, which are made up of filament. So basically in filament, okay, so when we are talking about the filament lamp, so in filament lamp, the resistance increase with increase in temperature. So it means that there will be a huge power loss, or there will be a high consumption of electricity when we are working with the filament lamp. So that's why we replace these filament lamp with LED. So LED saves electricity and more energy as compared to the filament, because it is not working on the principle of the resistance and the temperature. So basically LED is, question number 10.
Okay, in this question, figure 10.1 shows a copper wire placed on the two copper rods in the magnetic field between the poles of a magnet. The crocodile clip A touches the positive terminal of the battery. This causes the copper wire to move. On figure 9.1, mark with an arrow the direction of the current in the copper wire. Explain why the first you need to draw the direction of electric current in the copper wire. So what will be the direction of the electric current? From positive to negative? From positive to negative. So current will move from this point to this one. And the next, why the copper wire moves along the copper rods. So this is a copper wire which is placed in the magnetic field, and these are the magnet copper rods which are in white colors. To explain why the copper wire moves along the copper rods. Again, the concept is same, only the situation is and the experiment is different. You need to use the same concept of electromagnetism, that when current passes, or we can say that current carrying conductor is placed in a magnetic field, because when this point A touches the positive terminal, so circuit is complete and current passes through the coil. So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, so there will be a value of induced EMF, which is, or there will be a force acting on the conductor because current is passing through it. Magnetic field is moving from north to south. So there will be a force or a quantity of force acting on the wire, which moves this copper wire through the or along the copper rods, right? So you saw that there are multiple questions, but in all questions, the answer scheme are same. They are asking with different reference, different diagram, but their answers are completely same because concept is same. Just the orientation of the diagram and the concept is different. Otherwise, the concept is same in all the questions. Now again, they are asking name two different devices that use this effect. So we know one is the DC motor, and one more device, The AC motor? or AC generator. Okay, so these are the two components. So in multiple questions in multiple concepts in different past papers, most are related with the same concept, and mostly they are asking the same question that explain why the copper wire moves or why the conductor moves or why EMF will induce, and name the components or name the other ways how EMF will increase or the magnitude of EMF will increase. I will share this file with you people so you may check out the question. Most of the questions are from the old past paper like 2010, 11, 12. So don't need to solve those questions because most of the questions are okay. I am sending this file to you. I will mark the stars on the question. So try to solve those questions. So that will be easy for you to know the question that which concepts and which questions are included in our exam. So only solve those questions. And this PDF file is completely compiled from all electricity section. So that is difficult for students to solve the electricity question. So that's why first we start with the electricity section. So let me know